Golden spice, golden profits, but only if you know where the market is moving next. Welcome back to Ajastro Money Guru, your ultimate source for the most advanced and timely commodity analysis. I am Priya, and today we have a critical update on turmeric. Prices are holding firm, but with major crop concerns and shifting export numbers, what's the real story? Let's dive straight into the numbers and uncover what this means for your trades. दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं आज 16 जून सन 2026। दोस्तों हमारे पिछले 4 से 5 वर्षों से लगातार लहसुन और प्याज के ऊपर जो हमारे अपडेट हैं, अग्रिम विश्लेषण है, रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट है, वो आपके द्वारा काफी सराही गई है। देश के कोने कोने से हमें समाचार और इंक्वायरियां प्राप्त हो रही हैं। दोस्तों साल 2026 प्याज और लहसुन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पूरी रिपोर्ट पीडीएफ के रूप में उपलब्ध हो रही है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको देखिए और डायरेक्ट आप पेमेंट कर आप देख सकते हैं प्याज और लहसुन का अक्टूबर और नवंबर 2026 तक क्या संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से देखिएगा। रिसर्च रिपोर्ट मात्र एजुकेशन व रिसर्च के लिए दी जा रही है, किसी भी प्रकार के लाभ हानि की जिम्मेदारी हमारी नहीं होती है और ये रिपोर्ट वन टाइम है, इसमें किसी भी प्रकार की टेलीफोनिक बैकअप नहीं हो पाएगा। कोई भी इंक्वायरी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। साथ साथ पेमेंट कर आप डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, पेमेंट कीजिए और प्याज और लहसुन की पूरी जानकारियां अक्टूबर से नवंबर 2026 तक प्राप्त कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। Let's start with the futures market. We are seeing a very firm undertone across major producing centers. Recently, the NCDEX June turmeric contract has shown steady momentum, settling higher and successfully trading well above the 16,500 rupees per quintal mark, even touching highs near 16,900 in recent sessions due to fresh buying interest. Meanwhile, the August contract remains robust, holding firmly above 17,000. So what is driving this support? Primarily, it's a supply issue. Earlier in the week, total arrivals dropped significantly, falling short of expectations as key mandis in Maharashtra and Andhra Pradesh remained closed. While we have seen some farmers recently bringing in late harvested stocks to fund their kharif sowing, the carry forward inventory is much tighter this year, estimated at just around 15 lakh bags compared to over 20 lakh bags last season. Furthermore, weather remains a massive wildcard. The absence of meaningful rainfall in core growing regions and the looming threat of the El Niño weather pattern have sparked serious anxieties about next season's crop yield. In the spot markets, this supply tightness is highly visible. Polished turmeric at Nizamabad has been quoting strongly around 16,380 rupees per quintal, with the unpolished variety holding near 15,490. If we look at Sangli, the premium Rajapur variety is currently commanding prices near 17,880 rupees. Domestic retail and kirana demand have improved remarkably over the last few weeks, keeping a solid floor under these spot prices. On the global front, the dynamic is shifting. While long-term international demand remains resilient, we recently saw a short-term dip with March export volumes dropping slightly year-on-year due to increased global competition. However, as geopolitical tensions ease, traders are highly optimistic about a resurgence in export buying. We are already seeing steady procurement enquiries from Bangladesh and continuous demand for certified premium turmeric from the European Union. Looking ahead, we anticipate a massive move in the turmeric market over the coming month. Will this be a bullish breakout or a sudden bearish reversal? You don't have to guess. For our exclusive advanced analysis, targeted trade setups and premium guidance, get in touch with our team today. Our contact number +9194 140 56705 is right here on the screen and in the video description. Don't forget to like, subscribe and trade smart. See you in the next market update.